हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो टुडे आई हैव पूर सिंह विद माय फ्रेंड यश साकरे। वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट Kruskal's algorithm for MST. MST stands for minimum spanning tree. So before going into it, let's understand what is spanning tree. Okay. So it is a connected subgraph S of graph G is said to be spanning if it satisfies these two conditions. S should contain all vertices of the graph G and S should contain vertices minus one edges. Okay, so let's try to understand with the example. Okay, here we have been given a graph G. We have been given three vertices A, B, and C, and three edges AC, BC, and AB. So spanning tree, here are the three possible spanning trees. So a spanning tree should contain all the three vertices A, B, and C, and one number of edges should be vertex minus one. In this case, 3 minus 1, that is 2 edges. So we can make a spanning tree by एक ए सी एच को हटा के बना सकते हैं, एक ए सी एच को हटा के बना सकते हैं, या फिर एक अपन बी सी एच को हटा के बना सकते हैं, या फिर ए बी एच को हटा के बना सकते हैं. ओके, so now let's look on to the properties of spanning trees. Okay, so a connected graph G can have more than one spanning tree. What does the mean connected means? Connected means reachability. So let's try to understand with the example. Okay, so this is a connected graph with four vertices A, B, C, D, and four edges. Okay, so suppose we make a spanning tree by removing this edge. Okay, removing this edge. So कनेक्टिविटी मीन्स रीचेबिलिटी, सारे वर्टिस को अपन रीच कर पा रहे हैं कि नहीं. बी टू ए अपन जा पा रहे हैं, ए टू डी जा पा रहे हैं, डी टू सी जा पा रहे हैं. बी टू सी जा पा रहे हैं क्या? हाँ, जैसे बी टू ए गए, ए टू डी गए, डी टू सी जा तो पा रहे हैं, डायरेक्ट पाथ नहीं पर जा पा रहे हैं ना. सो दैट मीन्स कनेक्टिविटी. ओके, and all possible spanning trees of graph G have the same number of edges and vertices. है ना, मतलब जैसे इसका चार वर्टिस, जिसके there are four vertices and three edges एक spanning tree. So और भी जितने भी spanning trees बनेंगे उनके number of edges and number of vertices same रहना चाहिए, है ना. थर्ड प्रॉपर्टी है कि स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव एनी साइकिल और लूप्स. ऑफ कोर्स ट्री बोल रहा है यार, तो ट्री में क्या होता है, कोई लूप या साइकिल नहीं होता. सो now removing one edge, fourth property is removing one edge from the spanning tree will make the graph disconnected. Disconnected means जैसे अपन ने कोई एक एज को हटा दिया, तो ये क्या है, अपन बी टू ए जा पा रहे हैं या अपन ए टू बी जा पा रहे हैं? नहीं, अपन वर्ड एक सारे वर्टिस रीचेबिलिटी होनी चाहिए, तो इसमें क्या होता है, रीचेबिलिटी खत्म हो जा रही है. लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, एडिंग वन एज टू द स्पैनिंग ट्री विल क्रिएट a cycle or loop. The spanning tree is maximally acyclic. Okay, of course. जैसे मान लीजिए इस एग्जांपल में अपन ADH को ज्वाइन कर दिए, तो ये क्या है, एक एच एक लूप क्रिएट कर दे रहा है, क्या एक लूप एक सर्किट क्रिएट कर दे रहा है. ऐसा स्पैनिंग ट्री में नहीं होना चाहिए. स्पैनिंग ट्री इज acyclic. Remember this. Now, what is minimum spanning? Minimum spanning tree means in a weighted graph, a minimum spanning tree is a spanning tree in which the sum of the weight of the edges is as minimum as possible. मान लीजिए वेटेड ग्राफ है, हर एक एजेस को कोई ना कोई वेट दिया गया. एक एज को अपन ने हटाया, मान लीजिए बीसी एज को अपन ने, तो सारे वेट्स का सम कितना हो रहा है 11. मान लीजिए डीसी का हटाया सम 10, ए बी का हटाया सम 8, ए डी का हटाया सम 7. सो इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट वुड बी दिस वन, है ना, क्योंकि इसका कॉस्ट कम है. मान लीजिए कोई एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं. जैसे अपन कोई दुकान जाते हैं, मान लीजिए आपको कोई सामान चाहिए, एक दुकान में 30 रुपए मिल रहा है, दूसरी दुकान में 40 रुपए मिल रहा है. ऑफ कोर्स अपन वो दुकान में जाएंगे जहाँ पे वो 30 रुपए मिल रहा है. अपन ये देखते हैं कि अपन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि कम से कम में अपन को मिल जाए. ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे कम से कम वाला केस कौन सा हो रहा है, ये वाला केस. ओके, गॉट इट. So let's look on. There are basically two algorithms for minimum spanning tree. One is KRUSKAL'S and second is Prime's algorithm. In this video, we are going to discuss about KRUSKAL'S algorithm. So what is the let's understand with the help of an example. है ना? So what in this example we have been given 6 vertices A, B, C, D, S and D. Okay. So what is our first step? We are अपन को सारे loops और parallel edges को remove कर देना है. लूप्स एंड पैरेलल एजेस मींस, मतलब जैसे ये सी, इस एग्जांपल में ये सी वर्टिस है, यहाँ से एक एज स्टार्ट होकर यहीं पे एंड हो जा रहा है, तो ये एक लूप होता है, जहां से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है. पैरेलल एजेस मींस मतलब ए टू बी जा रहे हैं अपन, यहाँ से दो पाथ्स हैं, ऐसे ये जा रहे हैं और ये मतलब पैरेलली कनेक्टेड है. तो अपन को वो रखना है जिसका मिनिमम कॉस्ट है और बाकी सबको रिमूव कर देना.
तो इसमें से 6 और 9 में से मिनिमम कौन सा? 6। ओके, ऑफ कोर्स 6। सो 9 को अपन रिमूव कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 10 11 रहता तो वो भी अपन रिमूव कर देते हैं। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट। Now, the second step is to arrange all edges in their increasing order of weight. We have two edge BD and DD having edge weight 2 and AC and CD having edge weight 3 and so on. At last, we have SC having edge weight 8. Keep in mind that we have to arrange weights in ascending order. Now, step 3 is to add the edges which has the least weightage. The least weightage is 2 and the edge involving are BD and DT. Adding them does not violate spanning tree properties. So we continue our next edge selection. Next weight is 3 and the associated edges are AC and CD. AC और CD को ऐड करने के बाद भी स्पैनिंग ट्री प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं हो रही है. So we continue our edge selection. Next weight is 4. 4 को ऐड करने के बाद एक लूप क्रिएट हो रहा है which violates spanning tree properties. So we ignore it. In this process, we shall ignore or avoid all the edges that creates a loop or a circuit. We observe that edge AB and BT having weight 5 and 6 also create loops. We ignore them and move on. Now we are left with only one node to be added. Between the least cost edge having 7 and 8, we shall add the edge with cost 7 which is SA. S6 का वेट 8 था बट हमें 7 लेना पड़ेगा बिकॉज हम मिनिमम एज वेट लेते हैं. By adding edge SA, we have included all the nodes of the graph and we now have minimum cost spanning tree. Time complexity. The worst case time complexity of Kruskal's algorithm is big O of E log V or big O of E log E, where E is the number of vertices and E is the number of edges. Here are some practice questions for you. Thank you.